What is up YouTube? Welcome back to the channel and welcome back to a new vlog after a very long time. और ये vlog मेरे को ना बहुत टाइम से बनाना था. Almost I was waiting for a year क्योंकि रोज़ एक एक जूता या हर महीने एक एक जूता आ रहा था. So this is all about it. It's gonna be about my sneaker collection. I have a lot of shoes, so I thought of making a video and showing you guys as well. बहुत बचपन से I used to love sneakers, so it has taken a lot of time for me to collect all of these, and almost I have all of the shoes I ever wanted. So stay tuned, like, share and subscribe. Let's go. Let me just stack it outside first. So मैं पूरा बॉक्स से निकल के एक लाइन में लगाता हूँ and then we'll talk about it. Enjoy the video. So we are just opening the boxes first and he's here to help us. Once we open the boxes, then we can put it in order. Those are the casual and those are AJ1 highs and those are the boots. So almost we've got every shoes. Let's start with the first one. This is something that I wear every day, almost every day you can say, because these are the Nike downshifters. You can wear it every day. It's a very comfortable shoes और बहुत सस्ता भी आता है. So you'll get it around 1800 1900. तो इसका ही मेरे पास सेम एक कलर है जो है white. These are the same ones. I've just worn it once or twice. It's a little dirty, but all black is my favorite. Then coming to this one, this is something that I wear for my workouts. ये वर्कआउट के लिए बहुत अच्छा शूज़ है. ये ऑलमोस्ट इसका भी प्राइस सेम है. मिंत्रा पे चेक करोगे तो इट गिव्स यू गुड डिस्काउंट एट टाइम. देन दीज आर द पूमास. ये मेरा ये सेक्शन का सबसे पहला शूज़ है. दीज आर वेरी कंफर्टेबल शूज़. यू कैन वेयर इट फॉर वर्कआउट्स, योर एवरीडे रन, योर यूज़. This is something that I've not worn. I think I must have worn it once. I like the color combination, the grey and black on these. So these are also good shoes. ये मैंने भूल गया था कि मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये मैंने ना सेम यही वाला मंगाया था. These are not worn even once. देख सकते हैं इसका सोल भी एकदम क्लीन है. हो गया रहेगा इसको भी 6 महीने ला के. एंड देन मूविंग टू दिस वन. ये मेरे भाई ने मेरे को गिफ्ट किया था. These are the New Balances. Very nice for your everyday use. If you are thinking of something going in this section, I would suggest you to go with these. These are the most comfortable out of all of this. So these are good shoes for workout. I wear it for workout at times or my run. Then coming to the Dung section, I like this one because it has a very unique colorway, green, beige and yellow. I just worn it once or twice क्योंकि ये सब आउटफिट में नहीं जाता है. These were given by my brother. These are good colors as well. Then these are likely to be my most favorite in this line because like always I've not used it. I've only worn it like once or twice maybe, but good shoes. You can wear this with any of your outfits, be it shorts या कुछ भी पहनो तो उस पे सब पे सूट करता है. These are also a good color. I like the colorway. It's very nice, brown and white. Very unique shoes. And जब पहनते हो तो बहुत उठ के आता है. This is something that I don't wear usually, but I like the colorway, the grey and red combination. This is something that I recently copped from Myntra. इसका ओरिजिनल प्राइस कुछ 4000 5000 का है, बट मेरे को ये 2000 में मिल रहा था, so I got it. I've worn it once. Yeah, I've worn it once. And it has a very good stance when you wear it. थोड़ा उठ के आता है. And you can wear it with any of your outfits, be it jeans, dark jeans, light jeans, anything. So I like this colorway as well. Then coming to this one, so you'll see these are that I got from Puma. This was I think a year ago when I brought these. Very nice, all black color. I like the sole, the finishing and everything. ये मैंने काफ़ी बार पहना है, मतलब 3-4 बार तो पहना है. एंड ब्लैक है ना, तो उस पर डस्ट भी बहुत जल्दी दिखता है. सो दीज आर समथिंग दैट आई लाइक. अभी ये मेरे को पसंद था तो आई गॉट द वाइट वन एज वेल. अगर मेरे से हुआ ना तो मैं ऐसा सबका नाम भी डाल दूंगा तो इट विल बी ईजी फॉर यू ऑल
and these are whites which is turning yellow slowly, so I'll have to start wearing these. ये मैंने 2-3 बार ही पहना रहेगा. एंड इसी का सेम है ये ग्रे. ये मेरा फेवरेट है ये तीनों में, क्योंकि आई लाइक द कलर का कलर वे विच इज़ द ग्रे वाइट एंड ब्राउन सोल. द बेस्ट पार्ट ऑफ द शूज़ इज़ द सोल. ये मैंने शायद एक भी बार नहीं पहना होगा. नॉट श्योर इफ आई वुड हैव worn it. So this is something that I like as well. These were all 3 Pumas that I showed you all. Coming to this one, this is a very subtle shoe. I like these a lot as well. I think I got these recently 2-3 months ago. This is all suede, so you have to wear it very carefully. और इंडिया का यही प्रॉब्लम है ना कि यू कांट वेयर दी शूज़ आउटसाइड डस्ट में, क्योंकि ये स्वेड का प्रॉब्लम कैसा होता है, डस्ट बैठता है और यू वाइप इट तो स्वेड क्वालिटी भी ख़राब होता है. सो दिस इज़ समथिंग इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर. अभी ये इसका सेम कलर का ये है ब्राउन वाला. ये ब्राउन भी बहुत मस्त कलर है, वेरी यूनिक कलर. आई वुड हैव worn it once, I think. I've worn it once. Very unique color. You can wear it with any white outfit or black outfit. These are my white go-to shoes. ये शूज़ मैं पहनता हूँ कम से कम मैं 2-3 हफ्ते में एक बार. वेरी अफोर्डेबल एंड मेरे को एयरफोर्स वंस लेना था बट ये काफ़ी बजट में आ रहा था, तो आई विल गेट अ एयरफोर्स वन. आई हैव द फुल ब्लैक but these are the whites that I like. I wear it almost with my casual, be it my if you wear a suit and you wear these down, it looks good as well. These are the red Pumas. These are also very good shoes. It's all suede. I might have worn it once or twice. Very nice color. This is the all-time famous Sambas. Wear it with any of your casual or formals outfit. It looks very nice. ये मैंने हो गया रहेगा 6-8 महीने. It's black, it's fresh. Black is what I prefer wearing most compared to the white one, because white थोड़ा मेरे को ऐसा गर्ली कलर लगता है. The reason मैंने इसको लिया था is because of the market hype. So these two colors are very good. And almost if you see, if I always have 2 of the same shoes in different colors, because if I like color, I don't know why I have that habit, I get another one of those colors. So finishing these 3 lines, let's move on to my favorite line and my colorful line. And because this is where I started my journey with, these are the, I'll zoom, these are the taxis, these are the UNC toes. Very nice color. I've worn it a couple of times. And one good thing is कि एनी और मेरा शू साइज सेम ही है, तो what I can wear she can wear, what she wears I wear. But that's how sometimes she wears some of my shoes, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट इतने सारे शूज़ है ना तो मेरा होता भी नहीं है पहनने, कभी 3 महीना 4 महीने में एक बार. So sometimes she wears it. Then coming to my favorite, you'll almost see me telling favorite because ये सब शूज़ ना कैसा मैंने बहुत दिल से, बहुत सोच समझ के और बहुत टाइम लेके, ऐसा नहीं कि कुछ ऑफ़र में है तो मैं ले लूँ. आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम टू सी द कलर वे, सी इफ इट मैचेस माई वाइब, सी इट मैचेस माई आउटफिट. सो इट हैज़, दैट्स व्हाई आई से फेवरेट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग. These are the bloodline, very good color. The black, the red lining with the white finish, very unique colorway. You won't see this, or you won't see anyone wearing these. These are the very hyped shoes, I would say. ये है the lost and found AJ1s. ये बहुत चलता है, बहुत लोग पहनते हैं इसको. And it has a very good colorway, I would say, red color. You can wear it with any of your light jeans. ये जो सेक्शन है ना, ये आप किसी के साथ भी पहनो. These are mochas. These are also a very good color. ये है I would say my favorite. I've worn these. ये सेक्शन में ना सबसे ज़्यादा मैंने तो इसको ही पहना रहेगा, ग्रीन को. These are the lucky green. Lucky green they call it. Very fresh, very nice shoe. These are the university blues. Recently लिया था मैंने इसको, 1-1.5 महीना हो गया रहेगा. These are another favorites of mine. Very unique. See this? These and the pandas are almost the same. But you see the Nike tick,
It's a little different, but these are the highs, those are the lows. Coming to this one was gifted by my brother too, and I'm not worn it. I think I might have worn it once. Annie has worn it. It's a little girly color, I would say. So Annie prefers on wearing it. These are my first, I think these are my first Air Forces, Air Force Ones, and these sizes are way big compared to that, क्योंकि Air Force के था ना, मैं baggy pants के साथ prefer करता पहनने, so I get a size or more, a little extra. These are my another favorites, all black Supremes. If you tell me to wear this with any of my outfit, all black will match any of your outfit. So अगर किसी को एयर फोर्सेस में कुछ अच्छा लेना है ना, तो यू कैन गो विद दिस सुप्रीम्स. वेरी नाइस. थोड़ा बॉक्सेस ना सबका इधर उधर हो गया है अभी ना, सबका बॉक्सेस ना इधर उधर हो गए ऑलमोस्ट. आई हैव ट्राई टू कीप एवरीथिंग टुगेदर, बट थोड़ा बहुत का ना बॉक्सेस डैमेज भी थे और थोड़े बॉक्सेस मैंने फेंके भी है. तो दीज आर अनदर एयर फोर्स वन दैट आई लाइक. ये भी मैंने एक ही बार पहना है, क्योंकि ये सब ना ये बहुत यूनिक कलर्स है. So you can't wear it almost with all of your outfits, because I like wearing all matching head to toe. So if my shoes is red, I like to wear a combination of a red t-shirt or a shirt or a jacket. So that's what I like. And then you'll see these. इसमें ना I put my crease protectors. So I'll show you all my crease protectors. So these are my crease protectors, which helps me prevent any creases on my shoe. So you pick up any of my shoe, you'll never see even one crease, and that is only because of these crease protectors. कोई भी शूज़ देख लो, और ये हो गया है ऑलमोस्ट, इसको और उसको छोड़ के ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है ये सब शूज़ को. दिस इज़ व्हाट आई वेयर इनसाइड माई शूज़. ऑनेस्टली फर्स्ट सेकेंड वेयर में ना बहुत अनकम्फर्टेबल होता है, बट थोड़े टाइम के बाद ना मस्त कम्फर्टेबल हो जाता है, क्योंकि you get used to it honestly, and I can't afford buying the same shoe again. So I like keeping my shoes very fresh. I like it to be very neat and tidy. Crease aa jata na to shoes looks very bad, to be honest. That's the reason I wear those. Now coming to my boot section, ये भी मैं recently लिया था, क्योंकि I wear this with my black skinny jeans. And then this is my boots का सबसे पहला वाला. So I wanted to take that one, so we'll come to that part. But these are the boots that I had got first. ये section का सबसे पहला boot है, Amazon से लिया था 2000 रुपये में, and very nice. मैं इसको अभी भी पहनता हूँ because I can't afford to wear that every day. Has a little crease on it, but very nice shoe. These are something that I wear with my, ये Annie भी पहनती है. तो Annie actually मैंने ये पहला मंगाया था, तो मेरे को थोड़ा गर्ली लगा था, तो फिर मैंने ये मंगाया मेरे लिए. तो एनी वेयर्स दैट, आई वेयर दैट. और कमिंग टू दिस वन, दिस इज़ माय सबसे, बोला ना तो ये पूरे 50-60 शूज़ में सबसे फेवरेट शू मेरा ये, द टिम्बरलैंड्स. व्हाट अ शू, माय फेवरेट शू, एंड यू कैन कॉप दिस विद एनी आउटफिट गाइस, एनी आउटफिट. इट्स सो गुड. And these are very expensive shoes. मतलब है इससे भी expensive वाले, but these are expensive. तो ये मैं पहला ये पहनता था, and then finally when I was afford to get something, मैंने ये लिया. This is another brown color in the same one. ये थोड़ा rusty vintage look है. इसको भी 1-2 बार पहना है मैंने, but बहुत unique है. So it doesn't matches with all of your outfit. But if you're going for a Timberland, you're thinking something, तो तुम लोग ये कॉप कर सकते हो. इसका ये मेरे पास एक थोड़ा ऑलिव ब्राउनिश कलर वाला था, ये मैंने लिया था. दिस इज़ प्योर लेदर एंड वेरी नाइस शू. ये भी तुम लोग ऑलमोस्ट, ये भी थोड़ा विंटेज या रस्टी लुक जैसा है. यू कैंट वेयर इट विद ऑल ऑफ योर आउटफिट, बट विच एवर आउटफिट यू ऑल थिंक ऑफ वेयरिंग इट विद, ये बहुत अच्छा लगता है. एंड देन कमिंग टू माई सेकेंड फेवरेट इन द बूथ सेक्शन, द ऑल ब्लैक. ये तो मैंने सबसे ज़्यादा पहना है बूथ सेक्शन में, ब्लैक. इट मैचेस विद एवरीथिंग. वेरी नाइस शू. आई वांटेड दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. नाउ कमिंग टू माई कॉलेज डेज,
where I had a lot of. So let's talk about it. Now coming to this, these shoes are very special to me because I used to wear it in my college days. I got it from Bandra. पूरा खराब हो गया ये shoes, but I only kept it because this is where when I used to wear these, I used to wish for all of these shoes. So it has a very special place and थोड़ा जगह खा लेता है, but I like to keep it for memories. I don't wear it now much, but I wanted to keep it, so I kept it. This is something all black भी मैं बहुत पहनता हूँ. एनी भी ये ज़्यादा पहनती है क्योंकि it matches with most of your outfits. And these are very affordable shoes, guys. If ये शायद सबसे if you all want to start your sneaker journey or you want to get something that you can wear to work or college every day, you all can wear these. This is the same one in white. ये मैंने black के पहले लिया था. ये भी थोड़ा डैमेज हो गया है. ये भी एनी कभी कभी पहनती है तो पहनी, नहीं तो अभी it's time, it's all spoiled now. This is something that I wear for my. So you see, I like this. I got this. So at least two of those colorway. This is that I wear to work someday. ये सब casual outfits में ना ये बहुत अच्छा दिखता है. The green, olive and the brown. And this is my formal shoe. And that is the loafers. Coming to this one as well. These are all sport shoes. The copy of Converses. तो इसका भी ये भी मैं कॉलेज में बहुत पहनता था. I couldn't afford any shoes and I didn't like to ask dad for money and all. I used to wear these. It's a very nice shoe. अभी पहनता नहीं हूँ मैं ज़्यादा क्या पहना ही नहीं है इसको बहुत टाइम से, बट ऐसे ही रखा है कि it's only memories that I have because these are shoes I used to. And that is all about it, guys. तो ये कॉलेज वाले जूते ना मेरे और भी थे 3-4 बिकॉज जब मम्मी थी ना तो मम्मी ने आधा सब शूज़ मेरा फेंका है 3-4 शूज़. आई यूज्ड टू वेयर अ लॉट ऑफ वैन्स एंड स्टफ एंड दैट इज़ ऑल अबाउट इट. बात करते रहते मेरी जान निकल गई. At least 50 to 60 shoes. There are a couple of shoes that I want to buy, like the white Air Forces, and this is what I always wanted as a young kid. I have my own sneaker collection, and I'm very grateful to my mom and dad that I was able to, build my own sneaker. We live for, honestly, for a person like me, we live for very small dreams. Since I've lost my mother, it is about keeping yourself happy in small things. That is something that I've started living with. और मेरे को बताओ कि which one of this is your favorite? Which one would you all like to, which one did you all like and which one would you all wear? Also, if you all have any questions about any shoe, you all can probably DM me on my Instagram. This is my Instagram handle. Also, if you think or if you can comment down on YouTube as well. इसके अलावा मेरे पास एक क्लॉथ फफल रहा क्यों मैं रनिंग आउट ऑफ ब्रेथ टू बी ऑनेस्ट. इसके अलावा मेरे पास क्लोथ्स के भी बहुत कलेक्शन है. आई हैव अ गुड क्लोजेट आई वुड से अकॉर्डिंग टू मी बिकॉज आई हैव थिंग्स दैट आई लाइक. आई डोंट नो अबाउट अदर्स. तो लेट मी नो. आई शेयर माई क्लोजेट टूर एज वेल. आई मेक अ वीडियो ऑन दैट. आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ वॉचेस. तो मैं वॉच पे भी वीडियो बनाऊँगा. फ्रॉम दिस न्यू ईयर आई एम planning, I'm planning to be a little consistent on YouTube. At least हफ्ते में एक वीडियो तो मैं डालूँगा. That is my goal. At least एक या महीने में 2 या 3 वीडियो तो का तो टारगेट है. And that will be very simple daily vlogs about cooking, cleaning, how do we manage ourselves every day. So that's about it. Thank you so much for watching. Take care.